का वितरण किया जा रहा है। हमारा आप सभी से ये उद्देश्य है कि मुफ्त में मत लेइए, पैसे लीजिए। ये जो पैसे हमें मिलेंगे वो कबीर कलामन लीगल डिफेंस कमेटी के चंदा के इसमें रहेगा, और जो दीपक, सिद्धार्थ और आगे हमें जो भी कुछ लीगल बैटल करना है उसके लिए इस पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इधर मैं अपनी सभी माननीयों को कहता हूँ कि अगर आप सीढ़ी जरा अमीर क्या कबीर कलामंच्या या सिटी ओपनिंगला मला इथे यायचं, मला आमंत्रण देऊन तुम्ही माझा जो गौरव केला आहे त्याकरता मी फार आभारी आहे. मी कबीर कलामंचबद्दल तुम्ही बघितलं, मला came to know about it only when I saw Anand's film, Anand Pato's film. And since then I was very excited about it. आणि त्यामुळे रामानं जेव्हा सांगितलं की तू येशील का, तू येऊन हे रिलीज करशील का विचारल्याबरोबर मी म्हटलं येईल, कारण पुष्कळ कारण आहे. एकच नव्हे तर there are several things. One is because Ramo and Anand are involved, and I know they have been involved with very good work for a long time. Secondly, because मी कन्नड माणूस असलो, मी बेंगळूरमध्ये राहिलो तरी कुठेतरी माझा एक भाग महाराष्ट्रीयनच आहे. मी इथं जन्मलो, अँड आय वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएन्स. आणि हे मी माझं कित्येकदा सांगितलेलं आहे की लहानपणी आय वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएन्स्ड बाय द मराठी इंटेलेक्च्युअल्स. 19th century महाराष्ट्र प्रोड्यूस सम व्हेरी ग्रेट इंटेलेक्च्युअल. टिळक, आगरकर, आंबेडकर, फुले सगळे. आणि कर्नाटकात त्या प्रकार काहीच झालेलं नाही. देयर वॉज नो इक्विव्हलंट मूवमेंट बिकॉज कन्नडा वॉज डॉमिनेटेड बाय द मायसोर स्टेट, which was, dominated in turn by the colonial regime and so on. So very little happened. त्यामुळे माझी जी बौद्धिक growth, I think that is entirely for Marathi, for which I am grateful. त्यामुळे, and I have been associated, I am glad to say, with many radical movements in Maharashtra. Along, I knew poets like Surveya. I was very close to people like Sharad Patil of today, whose book is getting released, and it has been to me a source of continual inspiration. Third, of course, and this is most important, this is getting, हे आजकालच्या भारतात, unfortunately, it's becoming important, is that we artists now have to stick together. When you hear that some कलाकारच्या विरुद्ध काहीतरी अन्याय होतोय, तरी तत्क्षणी आम्हाला त्याला रिॲक्ट करायलाच हवं, नाही तर दिस इज ओनली ग्रोथ. And this is very sad. I don't belong to any political party. मी कुठल्याही राजकीय पक्षाचा member नाही आहे, and I have nothing against the police. So I was reported in the press as saying that I was here to talk about the atrocities. Atrocities मला माहिती नाही, and I don't want to talk about the atrocities because काय होतं किंवा भाषा तापट होते किंवा भडक शब्द आम्ही उपयोग करतो आणि मग द लॉजिक गोज आउट टू द होल सिच्युएशन. मी आय बीन अ गव्हर्नमेंट सर्वंट, आय टेकिंग many government positions in academy, to Punala, film institute, and I know the problems. And I know the problems in a place like India, where today's criminals become tomorrow's politicians. I know the problems that police face because the kind of pressure they are put to how lawfully can they apply law. कारण आज ज्यांना ते अरेस्ट करते, आज ज्यांना ते शिक्षा देते, तेच उद्या त्यांचे मास्टर होऊन त्यांच्यावरून बसतात, त्यांच्या डोक्यावरून बसतात.
So I know the problem, but I think it's essential for those of us to realize one thing. We have a beautiful constitution, we have a beautiful democracy, of which we are proud, but unfortunately many of our laws go back to the 19th century. And where the laws don't go back to the 19th century, the mentality goes back to the 19th century. And this is one example, the prevention of antisocial activity. Ultimately, I was surprised to hear that it was introduced in 1967, because really it sounds like something that the British would have introduced in the 1880s. Because look at the name, unlawful activity. The prevention of unlawful activity, that itself has three negatives in it. Unlawful. Lawful काय आहे सगळ्यांना ठीक म्हणजे it's very easy कारण lawful असतं qualified असतं. Unlawful मग ते ठरवणार कोण कारण त्याच्यावर काही laws नसतात. Because you can't have laws about unlawful activity. So unlawful already becomes something. And then there's prevention because before it happens you are already deciding that this is going to happen. And pointers that are made by me, Desai and Varadkar and Reddy, is Hinsa Nako. And when Hinsa hote, when there is violence, certainly it should be prevented. But when someone decides beforehand, Hinsa hona hai ki nahi, at least they must prove that it is going to happen. And just on the basis of suspicion, take preventive action is the most dreadful way that any society can exist. पहला परिणाम क्या होता कि it causes fear. It causes fear in the society. It's not the gundas who are causing fear. It's not the terrorists. It's not the Maoists that are causing fear. It's the police who are causing fear. Because they are telling you are surrounded by fear. तो Maoist है, तो terrorist है. Here you have an example of people who just sang songs and they are suddenly there as enemies of the state. Now, the question then arises कि आमचा समाज, आमची राजकीय व्यवस्था काय इतकी मोडकळीला आलेली आहे का? Is it so fragile that two songs can just bring it down like that? It's going to collapse. That you've got to put them into prison and say, don't sing anymore. It shows the lack of sense of security that the authorities have in India. And thereby they spread that sense of authority because then they pick up enemies. In any healthy society, it should be possible for a man to get up, as it was said, get up and say, no, I oppose the system. I don't agree with it. I mean, when I was in London, there was a case I was in Hyde Park, is of course kind of light with this, but in Hyde Park, someone was giving a lecture saying, let's burn down the Buckingham Palace. And when it was going on, a policeman came, there was too much of a crowd and said, okay, those who want to burn the Buckingham Palace on the right, those who don't want to burn it on the left. Don't stop the traffic. That kind of confidence we require. Where we can talk of, what we want to do, but we don't become criminals simply because you voice that opinion. And it is incumbent therefore, even when I say prevention of unlawful activity, in any civilized society, the law and the state should give the benefit of doubt to the citizen, not to the lawmakers, not to the police. It's not for the police to say, I feel it. You must give the citizen his right to show that that he didn't mean or he wants to say whatever he wants to do on this. I won't go on about it because the subject has already been discussed by the speakers. It is very sad. What is sad about this kind of thing and other things that are related, the Vinayak Sen is another example, and of course the great farce that the Maharashtra government created of Asim, where some Vyanga Chaturkar was actually accused of bringing the whole state down. Now this kind of, it verges on the ridiculous, but it's not on the ridiculous because someone is affected and it creates a feeling of fear among those who are created. You see, because Chirac once said, Swaraj Maza Janma Siddha Hakka hai. But I think any democratic person can say, Vidroha Maza Janma Siddha Hakka hai. I will protest. If I create violence, if I affect someone else's independence, then of course you take action. Then you can say that, don't do it. He has his rights, you have your rights come to an end where the other man's rights.
But just by saying that I have the right to say, you can't say to me, stop it, that you're bringing the society down. And I'm afraid that this is becoming the policy increasingly of the state, and this is something that we have got to watch against. I'm very grateful to you all for having invited me here, and let me say that anything I can do to get these people out of the jail, to fight the case, I'll be very happy to do. Thank you very much. We'll have Q&A, but just before that, brief comment by Shyam. यहाँ पत्रकारों को हम बताना चाहते हैं, जैसे कि कबीर कला मंच के जो कलाकार है उनको पकड़ लिया है, वो कार्यकर्ता भी और कलाकार भी है। वैसे सुधीर ढवले जो है वो विद्रोही जो मासिक जो महाराष्ट्र में चलता है 2000 से 4000 तक लोगों तक पहुंचा था, अभी भी जारी है। लेकिन उसके संपादक, कार्यकर्ता, लेखक, विचारवंत और कुशल संगठक और अच्छा गायक सुधीर ढवले जो हमारा दोस्त, उनको भी देशद्रोह के कानून के आरोप में, झूठे आरोप में नागपुर जेल में रखा गया है। अभी ट्रायल उसका शुरू हुआ है। तो आज इसलिए हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर गिरीश कर्नाड इनको बुलाना ये औचित्य है कि पूरी स्टेट की जो दमनशाही है उनके खिलाफ दुनिया में बहुत सारे लोग, कलाकार ऐसे हुए हैं, उनका रिश्ता वहां तक आता है। और ऐसे बहुत सारे गांव में, जिलों में, शहरों में लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो पत्रकारों से विनती है कि इन सभी चीजों के ऊपर भी सब लोग ध्यान दीजिए। बस, जय भीम, राष्ट्र। अभी अगर आप में से कोई है जिनको क्वेश्चंस पूछना है, मिहिर देसाई नहीं है, पर बाकी अगर माननीय हो तो आपको कुछ पूछना हो तो ये वक्त है। अगर प्रश्न नहीं है तो कामयानी कुछ कहना चाहती है, क्योंकि बीच में शिवरी कोर्ट में उन्होंने दीपक से कल मिहिर ने जो बोला कि ज्योति सुषमा जिनको बेल मिला है, दीपक सिद्धार्थ जो कबीर कला मंच के हैं, वो और लड़कियों के साथ जो पुणे में है, एंजेला सोन करके है, अनुराधा है, इन सब के साथ इनका केस हैक किया गया है। और जब हम उनको मिले तो अभी मई में उन्होंने अपने दीपक देंगले ने शादी के 14 साल पूरे किए हैं। उनकी बीवी पूना में डब्बा बनाती है और उसको she has a disease which is incurable. I don't want to say it right now. और दूसरा ये है कि शीतल साठे, अगर आपने जय भीम कॉमरेड देखी हुई है, शीतल साठे कबीर कला मंच की रूह है। उसकी माँ रूबी हॉल क्लिनिक में काम कर रही थी, वो तो अंडरग्राउंड हुई है। उसकी माँ इतने सालों से काम कर रही है और उसको उसके जॉब से हटा दिया क्योंकि आपकी बेटी पे इल्जाम आया है। तो अब अगर ऐसे आप परिवारों पे दबाव लगाएंगे तो लोग माओवादी और नक्सलवादी नहीं तो और क्या बनेंगे? मेरा तो ये कहना है। अब बाकी प्रश्न ठीक है, धन्यवाद। सीरीज जरूर खरीदिए और मिनिमम 50 रुपए, लेकिन आपका दिल और अगर पॉकेट बड़ी है तो आप कृपया ज्यादा ले सकते हैं। ये एक डोनेशन ही है जो कि कबीर कला मंच और ऐसे बहुत से लोग हैं। मैं एक और नाम लेना चाहूंगी, जीतन मरंती का। वो महाराष्ट्र का नहीं है लेकिन वो झारखंड का है। जीतन मरंती भी दीपक देंगले, सिद्धार्थ, कबीर कला मंच की तरह गाने गाता है झारखंड में, और वो भी 1 साल से इसी काले कानून के लिए जेल में है।